Hello students, welcome back in the series of phrasal verbs. Since last 2-3 lectures, we have been discussing about phrasal verbs and trying to understand the grammatical responsibilities and concerns of the phrasal verbs. I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, महाराष्ट्र. कुछ पिछले लेक्चर्स में हमने phrasal verbs को जानने की कोशिश की. फ्रेज क्या होता है और फ्रेजल वर्ब्स किसे कहते हैं, किस प्रकार के पार्टिकल्स इसमें जुड़ते जाते हैं और मीनिंग कैसे चेंज होते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की. फ्रेजल वर्ब्स में आपको फ्रेजेस को बनाते समय, याद करते समय जो पार्टिकल्स जुड़ते हैं, जो प्रीपोजिशन हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं या एडजेक्टिव हो सकते हैं, ऐसे पार्टिकल्स को नहीं बदलना है. और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ टेंस आपको फ्रेजेस के पहले जो वर्ब वगैरह जुड़ते हैं उनको आपको सिर्फ बदलना है. तो वर्ब के साथ में अगर कोई प्रीपोजिशन या कोई एडजेक्टिव जोड़कर आता है तो इस प्रकार की रचना को हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं. इन दिस लेक्चर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एम टू आर. अलग अलग फ्रेजेस जो एम टू आर स्टार्ट होंगे, ऐसे अलग अलग फ्रेजेस को आज हम जानने की कोशिश करेंगे. पहला फ्रेजल वर्ब है मेक आउट. मेक आउट मीन्स ठीक से सुनाई नहीं देना, समझ नहीं आना. कांट सी और हियर समथिंग और कांट अंडरस्टैंड समथिंग और समवन. फॉर एग्जाम्पल, शी इज रियली स्ट्रेंज, आई कांट मेक हर आउट. Make up means stop being angry with somebody, put on cosmetics or invent a story. Make up करना, गुस्सा रोकना, कहानी खोजना वगैरह वगैरह मीनिंग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, she made up her face before going out. इसके पहले भी हमने आपको स्पष्ट कर दिया है कि फ्रेजल वर्ब्स के दो या दो से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं. सिर्फ आपकी समझ के लिए, जानकारी के लिए हम एक ही एग्जाम्पल कोड कर रहे हैं. नेक्स्ट है मेकअप फॉर और कंपेंसेट. इसका मतलब होता है मुआवजा देना, कंपेंसेट करना. मेकअप फॉर मीन्स द शॉपकीपर मेड अप फॉर द डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट बाय गिविंग अस अ डिस्काउंट. मेजर अप टू मीन्स बी गुड इनफ. उम्मीद के मुताबिक कामयाब होना या अपेक्षाकृत होना. He was so good at his job that no one seems to measure up to him. Meet with means how something happened to you. साथ कुछ घटित होना. He met with an accident on his way back from office. Next is note down. Write something for future reference. भविष्य के लिए, अपनी जानकारी के लिए या संदर्भ के लिए कुछ दर्ज कराना, लिखना. Note down his phone number so that you can call him later. Narrow down means reduce the number of choices. कम करना, अपनी choices के संख्या को कम करना. After seeing so many houses, we narrowed it down to these. Open up means to become less shy and communicate. कम शर्मिला होना या स्वभाव से शर्मिलापन जाना. What you feel and think. It looked her some time to open up to her teachers and express herself. Open up means to start or begin, शुरुआत करना. They opened up a new branch in this locality. Opt for means चुनना, choose करना. I opted for the cheaper car because I didn't have much money. Output means choose not to be a part of. हिस्सा नहीं बनना या भाग नहीं लेना.
I opted out of the business ventures because of the long working hours. Pass around means distribute it to everybody, sabhi ko baantna. Can you pass the cake pieces around? Pass away means die, marna. Her grandfather passed away in the morning. Pass by means go past without stopping. Stop briefly or miss an. Gujarna, nazdik se. I passed by her house in the morning. Pass off means to convince somebody of something. किसी को किसी चीज के लिए convince करना, यकीन दिलाना, समझाना. Although you are 40, you look so young that I can pass you off as my daughter. Pass on means give the message to someone. किसी को खबर देना. Please pass on the message to your sister. Pass on to means change or move to the other subject. विषय बदलना, किसी और विषय को शुरुआत करना. Let's pass on to a more cheerful subject. Pass out means lose consciousness, होश गंवाना. She passed out after such a big shock. Pass up means decline a chance, मौका गंवाना. I will pass up the chance to go to London in March because my son has his exams. Pick at means eat unwillingly, अनिच्छा से खाना. She is poor eater and just picks at her food. Pick on means bother, make fun of or criticize, मजाक उड़ाना. Just because you are senior doesn't give you the right to pick on your juniors like that. Pick out means choose, chunna. She picked out the red rays from the ones that I showed to her. Pick up means to improve, learn quickly or collect. बेहतर करना या साथ लेना. Don't forget to pick me up on your way back from the office. Pick up yourself means to recover or say back. नाकामयाबी से उभरना. It took him a long time to pick up himself up after the death of his mother. Point out means make someone aware of. किसी को आगाह करना, जानकारी देना. The teacher pointed out the mistakes that he made in the paper. Queue up from a line or a stand in a file. कतार में खड़ा रहना. You need to queue up if you need your coupon. Quieten down means to be quiet or go quit. शांत होना, चुपचाप निकल जाना. The audience quietened down once the chief guest started speaking. Quit on means stop supporting when the going gets tough or someone needs your help. कठिन समय में साथ छोड़ देना. Being a team member means you should not quit on your teammates when they need your support. Reach out to, seek help, offer help, or try to communicate and establish good relations. मदद करना, बातचीत करना, अच्छे संबंध स्थापित करना. It's important to reach out to your near and dear ones when you have suicidal thoughts. Read up on means to do research, संशोधन करना. I'm finding this subject of artificial intelligence very fascinating, and so I am reading up on it. Rein in means to control someone, to stop them from causing trouble. नुकसान करने से बचाना, रोकना. It's important to rein her in because she has no control over her temper. Rip off means charging much more than what is worth. उम्मीद से ज़्यादा कीमत लगाना, जितनी कीमत है उससे ज़्यादा कीमत लगाना. The tourists get ripped off if they don't have a local person accompany them. Rub it in means to make someone feel worse about a situation.
किसी को बुरा महसूस कराना. They already feel bad about when he didn't perform well in his exams. His parents rubbed it in by telling him about his friend's success. Rule out, exclude the possibility. संभावना से इनकार करना. She ruled out seeking financial help from her parents to pay the debts. Run after means chase or to pursue. पीछा करना. The dog runs after every moving vehicle. Run into means meet by accident. अचानक संयोग से मिलना. I ran into my school teacher in the airport. इस प्रकार से हमने कुछ अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स को जानने की कोशिश की है. ये 3 अलग अलग लेक्चर्स आपको मदद करेंगे फ्रेजल वर्ब्स को समझने के लिए. आगे कुछ और फ्रेजल वर्ब्स है जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.